Hi, good evening. Yeah, good evening. Can we start? Yeah. I guess Vinay, we should start. It's 8:05. Yeah, we'll start. Would like to just set the tone or will yeah. Yes, Poonam, you'd like to just briefly share about the pink mind and then we'll start. Yeah. Yeah. So welcome all of you from Pink Mind. I'm Poonam Navle, organization who works towards mental health. So we have three verticals: individual counseling, group session, and corporate. So today, what we have is under the group session. So this is our second Yeah, you got mute. Yeah. oh, sorry. Yeah. So after completion of the first session in Mumbai in month of April for the same program that you can heal your life, Vinay and I decided to launch our second batch in month of July. We will be getting more about this methodology and what is this all about. Um, so without wasting time, I would like to introduce Vinay. So Mr. Vinay Gosavi is internationally certified trainer for you can heal your life. So you can heal your life is worldwide famous philosophy developed by the great Louise Hay. She's a great healer, and her methodology is not just the philosophy, is scientifically proven and approved by many universities. So the program and this healing work, what we are going to talk about today in today's introductory webinar, this entire work has a scientific base. So Vinay is internationally certified trainer. To conduct this kind of program, a trainer has to be certified by Louis Hay Foundation. And they also need to renew their license per year. So we are happy to have Vinay with us. He has a huge experience conducting this kind of workshop with adult, with youth, with corporates. Apart from that, he's an amazing trainer. He himself believes on constant learning. Like he keeps himself upgrading about technology. So now I will hand over to Vinay. So Vinay, please welcome in this session and over to you. Thank you so much, Poonam, and thank you, Pink Mind, for inviting me here for this wonderful interaction on a beautiful philosophy of heal your life based on internationally renowned Louis Hay's philosophy. So we'll get started. So once again, very warm welcome all of you for showing up, and most of you might be connected to Louis Hay's work, or you must be curious also to know about what this heal your life is all about. So let's get started. When we talk about heal your life or meaning of the healing, so somewhere the thought may occur ki, is there anything wrong with me that I have to get healed or get, like sort of coming back to the normalcy? So here healing is more to do with whatever might have happened in our past. How do we shift to a new level of thinking, new level, and create a new level of reality at all levels, at holistic level. So before we begin, we will keep it more interactive, more participative, so that whatever we discuss, definitely I assure that after the end of the workshop, we will get at least 2 to 3 tools which will empower us
in our day-to-day life or even critical times, so that we will be equipped to deal with our uh, life's various situations. And our dimension jo rahega, I think Hindi in between is also fine. If anybody who doesn't follow Hindi, please let me know, so I'll keep it purely in English. So एक अलग तरीके से एट अ डिफरेंट लेवल हमारा लाइफ ऑपरेट हो सकता है. So how many of you have read or heard about Louis Hay's work, or you have been following? If you could just uh, write in the chat box or unmute or share the reaction by thumb, it will be helpful for me to understand that how many of you are already connected to Louis Hay's work. Yeah, thank you, Chandan. Yes, and we would appreciate if you are in position to uh, show up on video. If you could turn on the camera, that will also be more personal, because it will help us interact more if it is feasible for you, because we want this interaction to happen in the more quality way. So we urge you, if it is feasible, you can turn on your cameras and keep maximum participation. So just, we don't want to just share some slides and finish it off. It's more about bringing out our best. Okay. Okay, no problem if you are not able to. I understand there could be many priorities as well, if it is easily comfortable. Okay, so if you are a dentist, you better open your mouth and keep the camera shut. So we respect and we appreciate your commitment to self-development. Yeah. So Louis Hay is an internationally renowned author of the book You Can Heal Your Life. And before we begin, I would just like to briefly share about her journey. Like, she was born in USA, and unfortunately, like all her till her middle age, she had gone through various challenges. She says that since uh, 18 months of her age, she had gone through various challenges, upheavals in her life, right from physical abuse, various types of exploitation, and her life was not working. At the age of 40, I will not go much into the details, but the point we can highlight here is key when she started working on herself by attending one workshop, which was like Science of Mind. She attended that workshop, which her friend invited, and the friend did not turn up, but she attended that workshop. And there she found out that if I change my thoughts, if I change my emotions, if I shift that energy, my life will work for me. My life will start showing better results. And then she thought, till now, abhi tak aisa happening kuch hua hi nahi hai. Why not try it out? I have got some path, some hope, ray of hope. So why not work on that? And then she started working on that, and it started giving her results. And then gradually she started working on her thoughts, metaphysical and other parts of these modalities. And many positive things started happening. And as she was following, she was diagnosed with cancer. And doctor has given her like a notice. Request participants, if you are somewhere in the traffic, please keep yourself mute. So she was diagnosed with cancer, and okay, so yeah, Hindi mein bhi bolunga. There is somebody who doesn't understand Hindi, so I will keep it Hindi and English mix. Yeah, I think Hindi is fine. तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उन्होंने तब तक इतना स्टडी किया था कि ये कैंसर सिर्फ बीमारी नहीं है जो 40 साल तक मैंने सप्रेस करके दबा के रखा है, मेरा
सैडनेस है, मेरा दर्द है, इमोशनल पेन है, एंगर है खुद के ऊपर, दूसरे के ऊपर, जो गिल्ट है, मैंने ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फियर है कि कैसे मैं जी पाऊंगी अच्छी तरीके से, मेरा तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छा नहीं है, आई डोंट हैव सोशल स्किल्स, तो मैं कैसे डील कर पाऊंगी। सो बिकॉज ऑफ दैट शी कुड रिलेट कि मेरे जो बीमारी है कैंसर की, है सिर्फ फिजिकल डिसीज नहीं है, मेरा 40 साल का पूरा दबाया हुआ इमोशनल सप्रेशन और एक प्रकार का पेन है। एंड देन शी स्टार्टेड रिलीजिंग दैट, शी स्टार्टेड इवन गोइंग टू वेरियस अल्टरनेट मेडिकल थेरेपीज, जिसमें उनको सिखाया गया कि हाउ टू डिटॉक्स द बॉडी, हाउ टू डिटॉक्स इवन इमोशंस, सेपरेट इमोशन को कैसे रिलीज करें। और 6 महीने के दौरान जब वो फिर से डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो शी गॉट टोटली कवर्ड फ्रॉम द कैंसर। इवन मेडिकल हिस्ट्री में वो एक मिराकल माने जाते हैं कि लुइस है कवर्ड हर, क्योर्ड हर कैंसर, उनका कैंसर खुद ने उन्होंने हर तरीके से रिकवर किया, और उसके बाद शी लिव्ड मोर 52 years स्प्रेडिंग दिस वंडरफुल मैसेज ऑफ सेल्फ लव हीलिंग। तो आज 2-3 टेक्निक तो हम जरूर शेयर करेंगे, सीखेंगे कि जिसमें हम अपने आप को बीमारी से कैसे या निगेटिव पैटर्न से कैसे दूर रख सकते हैं। और सिर्फ निगेटिव पैटर्न से दूर रखना ये जिंदगी नहीं है, तो हमारी जिंदगी या लाइफ के और जो अलग अलग सुंदर एस्पेक्ट्स है, उनको हम कैसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सो आई होप full screen is unfortunately not working on my PC for Zoom. So I will not go again into my introduction. So these are various workshops we conduct for educational institutes and industries. But today is all about me. अरे अभी कल ही एक इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया, तो एक योगा पोस्चर से हम शुरू करते हैं, बीच बीच में हम छोटे मिनी योगा करेंगे। सो एक छोटा सा योगा है, वो चेयर योगा है, आपको करना है मेरे साथ। तो आपको आपका राइट हैंड जो है ऐसे सामने, जैसे हम रिसीव करने के पोस्चर में ऐसे लेना है, स्ट्रेट रखना है, सिर्फ आगे कैमरा या कोई है तो संभाल के, इवन इफ द कैमरा इज ऑफ यू कैन डू इट जस्ट 1 minute योगा। आपको ऐसे सामने करना है आपका हाथ, एंड देन इसको राइट एंगल में फोल्ड करना है लाइक दिस, right angle, but you have to keep it like this. Again you have to move it like this, और आगे जाने, और and now pat your back और खुद को बोलो I am proud of you. Just do it, not just at a formality, but say to yourself I am proud of you, because showing up for our own development is the sign that we want to enrich our life. जब हम खुद अच्छी ऐसी चीजें हैं, जिस जैसे लुइस है बोलती है कि मैं आपके जिंदगी में कहीं से तो एंटर कर रही हूँ, इसका ही मतलब है कि आपकी जिंदगी और अच्छी होने वाली है और बेहतर होने वाली है। सो विद दैट इंटेंशन वी आर एक्नॉलेजिंग, हम खुद को सराह रहे हैं, खुद की प्रशंसा कर रहे हैं। एंड लुइस का एक संदेश यही भी था कि खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को और अच्छे तरीके से स्वीकारना। So let's move ahead with some of her pointers कि you can heal your life। इसलिए लुइस ने बुक का नाम लिया कि मैं आपका जीवन और संवारने नहीं वाली, वो मैं टूल्स दे सकती हूँ, मैं आपको इनकरेज मोटिवेट कर सकती हूँ, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी और हमारी ताकत है कि हम अपनी जिंदगी, खुद की जिंदगी और अच्छी और बेहतर बना सकते हैं। सो पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को, डू वी लव आवरसेल्व्स रियली? हम बोलेंगे हाँ जरूर करते हैं, क्योंकि खुद के लिए तो हम जी रहे हैं, हमारे लाइफ में हम सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स है जिसमें हम, इधर आपको आंसर देने की जरूरत नहीं, बट यू कैन आस्क योरसेल्फ कि क्या हमारी लाइफ में ये चीजें हम डेवलप कर रहे हैं क्या, या हमारी ये चीजें हमारी लाइफ में हो रही है क्या। जैसे आर यू नोटिसिंग अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव डायलॉग? हमेशा एक
जैसे बोलते हैं ना, कैसेट या प्लेयर घूमते रहता है दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, अभी ये काम बाकी है, अभी मुझे ये करना है, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, अब ये कल होने वाला है। तो हमेशा एक निगेटिव पैटर्न घूमते रहता है क्या। दूसरा है कि कुछ हमारे लाइफ में हुआ है, तो उसके बारे में, ऐसा मेरे बारे में क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्यों किया, जो पास्ट में कुछ घटा है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं क्या। और एक चीज है कि आर वी सीकिंग अदर पीपल्स अप्रूवल, माने कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं उसके हिसाब से मैं डिटरमाइन करता हूँ कि मैं खुश हूँ या मैं खुश नहीं। अगर मेरे बारे में ये लोग ऐसा सोच रहे तो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। और हमेशा क्या मैंने क्या गलतियां की है, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे ये क्यों नहीं आता है, ये मुझे क्यों नहीं मेरे से हो रहा है, ये हम सोचते हैं। या हम अपनी ताकत या हमारी क्षमताओं के बारे में सोचते हैं। और हालात के कारण, सिचुएशंस के कारण क्या मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं, मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं इसको ओवरकम करूं। सो दीज आर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस जो हमें बताएंगे कि क्या हम सेल्फ लव यानी खुद को कनेक्ट होने के रिलेशन में क्या हमारा एक लेवल है। और वो लेवल बढ़ाने के लिए आज हम कुछ चीजें देख रहे हैं। तो अब एक छोटा सा रिलैक्सिंग एक अवेयरनेस एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। अगर आप ट्रैवलिंग या बाहर है तो आप आंखें बंद मत कीजिए, यू कैन जस्ट बी देयर विद द फ्लो। But if you are in the position where you can close your eyes, where you can be with us with our uh, guided meditation, it will not take much of the time, but it will definitely give us a wonderful insight. So I would request wherever you are, just sit comfortably, just lean behind, and दोनों आपके हाथ है वो आपके चेयर पे या आपके घुटनों के नजदीक open to sky रखे. That shows that we are open and willing to receive wonderful gifts from the universe. So sit in the relaxation position, be wherever you are, and for just some time close your eyes. थोड़ी देर के लिए आप आपकी आंखें बंद कीजिए and slowly breathe in, slowly breathe out. Again, gently breathe in, gently breathe out. Slowly breathe in and feel a wave of relaxation from your head to your feet, completely relaxing your body. आपके सर से लेकर पैर तक एक रिलैक्सेशन की हवा आपके संपूर्ण शरीर को रिलैक्स कर रही है और आप ये महसूस कर सकते हैं। अभी आंखें बंद होते हुए ही आपको, आप इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं आपके रूटीन में से, रूटीन लाइफ में से एनी नॉर्मल डे विच हैज जस्ट स्टार्टेड। आपका नॉर्मल शेड्यूल में से दिन, वर्किंग डे जो अभी शुरू हो रहा है। यू हैव जस्ट गॉट अप फ्रॉम द बेड। आप अभी अभी उठे हुए हैं नींद से, यू जस्ट गॉट अप। और पहले विचार मेरे मन में, मेरे दिमाग में कौन से आ रहे हैं, व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स कमिंग टू मी, कमिंग इन माय माइंड। एज अ सीसीटीवी, जैसे सीसीटीवी जैसे ऑब्जर्व करता है, not getting into our own routine, we are just observing ourselves from a distance. हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या ये थॉट्स एम्पावरिंग है, मुझे पावर देने वाले हैं, या वो मेरी पावर खींच रहे हैं, या न्यूट्रल है। यानी मुझे ऐसे लग रहा है बाप रे कितने काम है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, अभी ये डेडलाइन अचीव करनी है, ये काम है, इससे मिलना है, ये तो मुझे, मैं इसे पसंद नहीं करता। या नॉर्मल है कि ठीक है अभी तैयार होके जाना है, ऐसे बहुत इंटेंस थॉट नहीं है। या पॉजिटिव है कि कितना अच्छा दिन है, आई एम ग्रेटफुल कि आई एम सीइंग दिस डे,
और मैं मेरे नॉलेज स्किल टैलेंट को और अच्छी तरीके से यूज करके मेरे गोल को अचीव कर सकता हूँ. आई एम एक्साइटेड फॉर द डे. जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज माय टिपिकल रिस्पॉन्स और इमोशनल स्टेट व्हेन आई गेट अप ऑन एनी नॉर्मल डे, रूटीन डे. अभी आप विजुअलाइज कर रहे हैं जब व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर द डे, आप तैयार हो रहे हैं, तो तैयार होते समय आपके दिमाग में कौन से विचार है? अगेन इस तीन कैटेगरी में, वो हेल्पफुल एम्पावरिंग है, न्यूट्रल है, या डाउन करने वाले एनर्जी को विचार है. जस्ट ऑब्जर्व. डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, डोंट जज योरसेल्फ. हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये एक अवेयरनेस एक्सरसाइज है. अगेन टेकिंग डीप ब्रेथ. when you're starting a day either for a work or for college or any of your other tasks, if you're a homemaker preparing something at home, जब हम दिन की शुरुआत काम की कर रहे हैं तो मेरे काम को जाते समय ट्रैवलिंग में और काम की शुरुआत करते समय what are my typical thoughts? Just observe. Again without judging. खुद को बिना कोसे, बिना खुद पे गुस्सा किए जस्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. While taking a deep breath, we are moving little ahead in the middle of the day. कि दिन के बीचों बीच मेरे टिपिकल थॉट्स कौन से हैं? एम आई अवेयर कि मेरे थॉट्स कौन से हैं? मेरे कलीग्स के बारे में, मेरे ऑफिस के बारे में, कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ होना चाहिए था मुझे. आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड विथ व्हाट आई एम डूइंग एट माय वर्क. ये नॉर्मल रूटीन का विचार है. जस्ट ऑब्जर्व. And again taking a deep breath as we close the working day. हमारे काम का हम दिन के अभी क्लोजिंग कर रहे हैं, तो what are my typical thoughts? Also while returning home, घर जाते समय या मेरे जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ what are my typical thoughts? Just observe. Evening time में when I am with my family or whatever way I am spending my evening typically on a routine day, तब मेरे दिमाग में कौन से विचार हैं? Just observe. And now taking deep breath, we are going to bed, closing the day. दिन का हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो उस समय मेरे दिमाग में कौन से विचार है? Am I just hitting the bed without being conscious? Am I expressing gratitude for the day spent? Or I'm just in my neutral state? कौन से विचार है? Just observe. And again take a deep breath. Slowly breathe out. Again bring your awareness back to the present moment. एक दीर्घ लंबी गहरी सांस लेके हम जहाँ भी है हमें वर्तमान स्थिति में हम ला रहे हैं. और जब हम तैयार है, whenever we are ready, please open your eyes. Slowly you can open your eyes. Okay, here I would like to ask you कि if you could observe, must have observed कि दिन के इस पूरे quick recap में could you feel somewhere there is a possibility कि इधर में मेरी energy और empowering thoughts, I can take charge of my emotions and thoughts and I can shift that energy? Or anything you would like to share during this exercise, if it's okay, either in chat or you can unmute. I would appreciate, I would love to know your response for this simple activity, powerful activity. Yeah. Hi, Vinay sir, Lalita this side. Yeah. Good evening. Good evening. Yeah.
So, what I noticed while doing this form of a meditation or self awareness, that what usually the thought comes. So, since I'm working, so Mm-hmm. what I feel that when I get up in the morning, usually as a human being, what we feel that what is the next task which we need to do, you Mm-hmm. know. Right. Suppose if I have to make my kid get ready for his school, or what I have to prepare for the breakfast, so the mind is so thinking about the next moment actually. And the what I think that majority that we are hardly, we are living in the present, we are not even noticing that what kind of thoughts, because it goes on the automated on an automated way. We don't even pay attention what is going on, because the next task is so much occupied in our mind that we are just thinking about the next step. Right. And like suppose, okay, now taking a cab, okay, how much time will it take to reach the office? And the moment we reach the office, it is okay, now what assignment, what meeting, what project, all that. And even while eating also, because because most of the time people in the office, they are thinking about their workplace, about their assignments. So I guess maybe because of all of us, we are in the same energy, so then again we go in the same mode. And yes, unconsciously we are thinking most of the time, anticipating that kind of work, those related thoughts. And second thing, people who are daydreamer, like at times I think a lot, what is lacking in our life, where we're not happy with the current position, in the current environment. If I'm not happy for my job, so then I said I want something like that. So again, the lacking thoughts goes, more the desired scene of my life, that go keeps on going in the mind actually. Oh, we want this kind of job, or we want this kind of health. Or suppose if somebody is having lack of finances, so then they, I guess, those thoughts will more running in their mind. If somebody is very wants to reduce weight, so more or less that kind of thoughts will be predominant in their mind, what I feel. So yeah, these are the, I can from my experience, I can say that these two kind of thoughts, that the desired position, the thing which I'm not having, and Mhm. the task which I need to do. So yeah, these are the two things. Yeah, thank you, Lalita ji, for this honest and very clear-cut observation and sharing also. It takes courage to share that as well. So thank you so much. Thank you. Thank you so much. And Priyam ji has also shared in the chat that yeah, lot many like routine thoughts कि अभी next क्या करना है, next क्या करना है, एक anxious जैसे हम बोलते हैं कि एक हरी भरी sorry cycle जिसे हम we get trapped into it. Nothing bad typically, but we don't take time कि am I in charge of my life or am I just product of my situations and my happening the things happening around me. So इसलिए बहुत important है कि हम थोड़ा सा अनवाइंड करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और खुद की लाइफ को थोड़े अलग नजरिए से देखें जहां हमें एक चार्ज हम ले सके एंड दैट इज व्हाट द होल दिस वर्क इज ऑल अबाउट. इसलिए हमने ये अवेयरनेस एक्सरसाइज लिया कि ऐसे बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज हम 60,000 थॉट्स टू 70,000 थॉट्स पर डे सोचते हैं. हमने बहुत बार ये सोचा होगा. अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ आवर थॉट्स आर लिमिटिंग थॉट्स जो हमने बचपन से अपब्रिंगिंग में पाए हैं कि ये तू कर नहीं सकता, ये तुझे नहीं होगा. यस, या थैंक यू रामा कौशिक जी की you can relate and thank you for this open sharing. And here I'm not teaching you here, I'm just facilitating. Yeah, because so many thoughts, and unfortunately we are taught so many subjects since childhood from everything you take, you name, and we know those subjects. How to think, how to deal with emotions, how do we choose our thoughts? Yeah, how do we shift our thoughts and create a new reality? Because जो हमारा upbringing है वैसे ही, yeah, we are drowning, wonderfully said, कि in the reflections, and we think कि अरे वो मेरा जैसे sand हाथ से फिसल जाती है वैसे हमें लगता है कि I want to grab this day, but somewhere like it is like slipping out of my grip. So can we have a life
with the choices, जहां हम कह सकते हैं कि yes, I'm creating my reality. Of course, it is a journey, it is a process. और ऐसे बोलते हैं कि जब हम 300 से ज्यादा बार एक थॉट रिपीटेटिवली सोचते हैं दिन में, तो उसका एक न्यूरो पाथवे बन जाता है, एक मेंटल पैटर्न बन जाता है, एंड आवर ब्रेन थिंक्स कि ये पैटर्न इसके लिए ज्यादा सपोर्टिव है। लेकिन ब्रेन ये नहीं जज कर पाता कि ये अच्छा है या बुरा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पावर ऑफ चॉइस से हमें कॉन्शियस चॉइसेस करके हम ये पैटर्न बदल सकते हैं। और पैटर्न से एक छोटा सा एक्सरसाइज आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू लाइक डू इट। इट्स वेरी सिंपल बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो फिर से आपको Pallavi ji, we are on autopilot mode since morning till night, and Asha is sharing ki, glorifying health issues. Thank you so much for your wonderful sharing. And this is like Louis hai bolti hai ki if we understand our patterns, it's like finding the treasure. It's a treasure hunt game में हमें छोटे-छोटे clues मिलते हैं. So these are the clues, वो हमें लेके जाएंगे जो हमें रियली चाहिए। जैसे ललिता जी शेयर कर रहे थे कि हमें चाहिए, लेकिन कैसे वो ट्यून करना है। जैसे रेडियो को हम पहले जमाने में ट्यून करते थे, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को भी कैसे ट्यून करना है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ आपको ऐसे लेना है, और नाउ यू हैव टू क्लास्प बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड वन थंब शुड बी अप। कौन सा भी एक थंब आपका अप होना चाहिए, जस्ट लाइक माय राइट थंब इज अप। सो कौन सा थंब अप है अभी ऑब्जर्व कीजिए। अभी रिलीज कीजिए, हाथ रिलीज कीजिए। अभी अगेन वी विल क्लास, बट नाउ द अनदर थंब, द अदर हैंड का थंब ऊपर आना चाहिए, जस्ट लाइक आई हैड राइट थंब अप। नाउ आई विल रिलीज इट, अगेन क्लास्प इट। नाउ द लेफ्ट थंब should be up in my case. So वैसे जो आपका पहला ट्राई था उसके अभी दूसरा होना चाहिए। So everybody does it again, do it again. Second time, second thumb is up. Okay, good. अभी फिर से रिलीज कीजिए एंड नेचुरली होने दीजिए, नेचुरली क्लास्प होने दीजिए। अभी देखिए कौन सा थंब अप है, फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। You can just observe. Many times it is the first one because that is our comfortable pattern. क्योंकि सबकॉन्शियसली एक दिमाग को आदत है कि ये फर्स्ट टाइम, जैसे भी हमने सोचा है, these are our conditioned patterns. If you have consciously done, और तो सेकंड वाला हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम फर्स्ट वाले पर ही जाते हैं बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट रिस्पॉन्स। जैसे हमने भी अभी एक्सरसाइज में देखा कि जब हम सोचते हैं दिन से लेकर रात तक, हम ये नहीं सोचते कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे लुइस वुड से कि इज द थॉट क्रिएटिंग माय बेटर फ्यूचर, इज इट वर्थ इट, बट am I spend and I'm spending so much of my energy, so much of my like I'm investing my thoughts, my energy, my so-called reality in that thought, getting like contemplating those thoughts, getting even carried away with those thoughts, but is it worth it? So the good news is we can change our thoughts, and Louis would so lovingly say it's just a thought and thought can be changed. We don't have to change 60,000 thoughts. That will be a very cumbersome task. अरे 60,000 विचार मुझे shift करने हैं. No, we have to just shift these current moments, present moments, thought, and take charge of it, and gradually we will be able to. जैसे एक बारिश के बूंद से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बूंद बूंद सागर बने, वैसे ही अगर निगेटिव थॉट्स का बूंद बूंद बनेगा तो वी विल बी ड्राउनिंग ऑन दोस पैटर्न। बट इफ यू हैव दिस पॉजिटिव रिदम, वी बिल्ड दिस पॉजिटिव रिदम, जब हम सकारात्मक विचार के एक कतरा बन के अच्छा सरोवर या तालाब बन जाएगा, देन वी कैन जस्ट फ्लोट इन द
water body of peace, love, prosperity, gratitude. So the choice is ours that what we are creating, and that's why we can, जैसे हमने हाथ का पैटर्न शिफ्ट करना, वैसे ही कुछ कंडीशंस हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं, हमारे लाइफ को कर सकते हैं। क्यों, और ये क्यों करना है? बिकॉज एवरी थॉट वी थिंक, every thought we think is creating our future. We are not conscious, लेकिन हर जो विचार है कहीं ना कहीं हमारी रियलिटी फ्यूचर बना रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर वी वांट एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग जो हमें फ्यूचर हमारा बनाना है, और जो विचार हम कर रहे हैं अगर वो मैच नहीं है तो वो वैसी रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं करनी। हर एक को अच्छा जीवन चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, लेकिन अभी हम क्या सोच रहे हैं, हमारा इनपुट क्या है जिससे आउटपुट आएगा, वो इनपुट के बारे में हमें कॉन्शियस होना है, हमें और अवेयर होना है, और अवेयर होने के बाद साथ ही साथ हमें कुछ अच्छे टूल्स और टेक्निक्स डेवलप करने हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट टूल्स लुइस है शेयर्ड इज अफर्मेशन। सो अफर्मेशन यानी क्या है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा कि अफर्मेशन, ऐसे लोग सोचते हैं कि अफर्मेशन यानी थोड़ा दिन में समय निकाल के थोड़ी सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स बोलना। डेफिनेटली वो अफर्मेशन है, लेकिन दुई से और उसका एक डीपर और वाइडर एस्पेक्ट बोलती है कि एवरी थॉट वी थिंक, एवरी वर्ड वी से इज एन अफर्मेशन। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो एक अफर्मेशन, एक विधान, एक वचन है जो रियलिटी बनाता है। और ये गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। व्हाई इट इज गुड न्यूज एंड व्हाई इट इज बैड न्यूज, कैन एनीबॉडी शेयर? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारा फ्यूचर बना रहा है। So why it is good news, why it is bad news? It potentially. Vinay, I guess good news because it's like if I'm a negative person, so definitely that will become a mindset actually. And Mm-hmm. whatever I'll think, because it's a kind of an addiction. So Right. if I have a habit of thinking, if I have a habit of finding fault in everything, Mm-hmm. so finding fault in everything, that means, you know, I'm thinking negative, because with the positive think, with the positive thought, I cannot find problem in everything. So that means if the action which I'm taking, the roots are in my thoughts, Yeah, true. so I'm creating more negativity around me through that actually. So what I feel, that is how I perceive, that if I think positive, and then definitely I will look at all the situations through the lens of positivity. Even if something will not work, but then you know, if I'm having a habit of, you know, think positive in everything, so there also my focus will be okay, what is the solution, what is the learning, why it has happened. Because you know that, as you mentioned, that this is how those connection between the neuron, the pathways we have developed, that, you know, because your mind automatically in an automated way, it will go towards the solution, because you know this is how I think again and again. So Yeah. Thank you, Lalita ji. It was quite insightful. And yeah, as we have heard कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि वो पैटर्न शिफ्ट होने में, या एज प्रियम जी इज वंडरफुली शेयरिंग कि कॉन्शियसली नहीं हो रहा है, लेकिन बैड न्यूज इसलिए है कि वी आर क्रिएटिंग। सो व्हाट वी आर इनपुट क्यों डाल रहे हैं? या पल्लवी जी, थैंक यू। आई कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट आई वांट। सो वंडरफुल रिस्पॉन्सेस, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एक है कि जब जैसे बहुत बार हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, एंड वन अदर लुइस हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, I would definitely say, because I personally have experienced in my journey and in my participant journey, and globally लोगों ने ये अनुभव किया है कि how to deal with negative emotions और negative thoughts। बहुत बार हम suppress करके, brushing under the carpet करके उनको साथ एक समझौता करते कि जैसे बच्चे को बोला जाए कि अभी मेहमान आ रहे, गेस्ट आ रहे, तो तुम सिर्फ ऐसे बैठ जाओ। So it's not the solution. The child needs to be engaged constructively. वैसे ही negative emotion को deny करना कि as if it doesn't exist will not serve the purpose or give a proper solution. So how do we release? जैसे लुइस से बहुत अच्छा एक उदाहरण देती थी कि as if we are sowing the seed,
फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंड हैज टू बी फर्टाइल. जब हम बीज बोते हैं तो वो जमीन है वो उपजाऊ होनी चाहिए, तभी उसमें बीज अच्छा धारण हो सकता है. और सिमिलरली जब बीज हमें बोना है, उसके बाजू में जो घास फूस रहेगा, जो वीड्स रहेंगे, उसे हमें निकालना पड़ेगा. नहीं तो हम नरिश बीज को कर रहे हैं, लेकिन वो घास फूस या वीड्स ही उसका सभी नरिशमेंट या जो भी इनपुट है वो खा रहा है. सिमिलरली हमें पॉजिटिव थॉट्स तभी हमारे अच्छे जर्मिनेट होंगे जब हम अपने मन से, अपने कॉन्शियसनेस से निगेटिविटी को रिलीज करेंगे. So apart from consciously choosing positive thoughts, we need to also ensure that I am periodically cleaning my mental house. जैसे हम घर साफ करते हैं, declutter करते हैं, similarly am I aware कि कौन सी चीजें, anger, fear, guilt, resentment, criticism, बहुत सारे patterns है which are considered as disempowering emotions, खुद के साथ भी और औरों के साथ भी. So how am I dealing? We cannot deny their existence. We need to amicably deal with that कि वो emotion के साथ मैं कैसे deal कर रहा हूँ. So there are ways and methods in the workshop also. What we do, we release those with a powerful tools which Louis has designed कि anger को कैसे release करना है, जिसके कारण वो मुझे भी hurt नहीं करेगा, दूसरे को भी नहीं करेगा. Guilt को कैसे release करना है, fear और sadness को कैसे release करना है. So once it is periodically being released, वो affirmation ज्यादा डेवलप होगा. सो व्हाट इज अफर्मेशन? जैसे बोला कि वर्ड और थॉट जो हम सोचते हैं, तो उसे रिप्रोग्राम कैसे करना है, ये आज का आपका होमवर्क है. कि हर थॉट को, जो दो चीजों के लिए हम अफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक स्वयं सूचना. एक है कि कुछ हमारे लाइफ में नहीं चाहिए, हमें वो उसे रिमूव करना है. और दूसरा है कि कुछ हमें अपने लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है. जैसे किसी को बीमारी दूर करनी है, पॉवर्टी दूर करनी है, बैड रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन दूर करना है, या ओवर थिंकिंग रिलीज करना है, तो ये रिलीज करना है, मुझे नहीं चाहिए. और दूसरा है कि मुझे मेरी प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे मेरा यूनिक टैलेंट या स्किल को अनलिश करना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे और बेटर रिलेशनशिप चाहिए. कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, इसके लिए हम अफर्मेशन करते हैं. लेकिन देयर इज अ वे, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज प्रोग्राम टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, एंड द वे इज कि उसे हम प्रेजेंट टेंस में विद फीलिंग वर्ड्स बोलते हैं. इट्स नॉट अ मैकेनिकल एक्ट कि हम जैसे रिचुअलिस्टिकली बोलते हैं. रादर इट इज अ वे टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड. मान लो मुझे अभी अच्छी हेल्थ चाहिए, तो मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए. Our brain does not understand, subconscious mind doesn't understand that language. Rather we are programming ourselves, and universe को भी ये language समझती है. ऐसे बोलते हैं कि each cell in my body is vibrant with health and energy. My immune system is strong. I am healthy. So it is in present tense, and it is when we say with feeling. इसीलिए negative thoughts ज्यादा क्यों manifest होते हैं? Because negative emotion हम feel करते हैं, fear हम feel करते हैं, doubt हम feel करते हैं, guilt हम feel करते हैं, sadness हम feel करते हैं, and whatever we feel, we create that reality, and whatever we focus, it expands in our life. Where energy, where attention goes, energy flows, ऐसे बोलते हैं. So it's very important to feel the positive things also. जब हम विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो फीलिंग के साथ करें कि मेरी बॉडी हील हो रही है. लुइस ने कैंसर के लिए खुद के लिए किया. Whenever she used to have water, and whenever she used to respond to nature's call, she would think that all the negativities, all the toxicity is going away from my being. So when we visualize in that way, the body, the mind, and the external reality starts manifesting. तो एक तरीका है, आज से हम छोटे छोटे चीजों से ये शुरू कर सकते हैं. हेल्थ हो, रिलेशन हो. And one of the fundamental affirmations of Louis are कि I love and accept myself exactly as I am. I trust life and I am safe. क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत बचपन से डाला गया है कि इधर सेफ नहीं है, उधर सेफ नहीं है. मीडिया दिखाता है, न्यूज़पेपर दिखाता है कि ये सेफ नहीं है. So I trust life. I am divinely guided and protected at all times.
मैं जहां भी जाऊं सुरक्षित हूँ, मैं मेरी जिंदगी पे मुझे भरोसा है, आई ट्रस्ट लाइफ, आई प्रॉस्पर वेर एवर आई गो, मैं जहां जाता हूँ हमेशा समृद्ध होता हूँ. This is the wonderful tool Louis has given. And now we shift to another wonderful tool and contribution rather Louis has given to the world, and that is body mind connection. कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है एंड उसे कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं. सो अलग अलग इमोशंस है. लुइस से contributes them to 5 to 6 इमोशंस की एंगर, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म एंड जो सैडनेस है वो हमें बहुत सारी बीमारियां 60 to 70% बीमारी कैन बी from rooting from this emotional patterns. So in her book, if you have read, or I would urge you to read, You Can Heal Your Life, she has given a chart in her book कि जिसमें वो कहती है कि कौन से विचार के कारण कौन सा बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है. और उसके बहुत बार ये 4-5 कारण होते हैं कि जब हम खुद पे गुस्सा करते हैं, दूसरों पे गुस्सा करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, लाइफ या सिचुएशन या पीपल को क्रिटिसाइज करते हैं, when we feel we are guilty, तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो our back shows up कि nobody is supporting me means nobody is backing me. So it is a probable emotional pattern जिसके कारण हमें पीठ दर्द भी हो सकता है. मैं डरा नहीं रहा, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अवेयरनेस के कारण, क्योंकि ग्लोबली हजारों लाखों लोगों ने, वी आर नॉट सजेस्टिंग अ थेरेपी हियर, बट दीज आर प्रोबेबल कॉजेस कि जिसके कारण हमारा मन का परिणाम, विचारों का परिणाम हमारे शरीर पे हो रहा है. जैसे हमेशा मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का बोझ मुझे ज्यादा है, सो शोल्डर पेन हो सकता है. जब मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिवली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा या मेरी मन की बात में खुल के नहीं बोल रहा, मुझे ऐसी एक डर या एक ऐसा सहमा सा महसूस करता हूँ, तो दैट इज लाइक आवर थ्रोट और क्रिएटिव सेल्फ इज बीइंग सप्रेस. तो थायराइड या थ्रोट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. हमेशा डर लग रहा है तो पेट के इश्यूज हो सकते हैं. हमेशा लाइफ के सिचुएशन को हम फ्लेक्सिबली या एडेप्टेबल नहीं है, या हमारे विचारों में हम फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हमारे जो जॉइंट्स है, जो नीज हो, एल्बोज हो या नेक मसल्स हो, वो शो कर सकते हैं. ऐसा पूरा उन्होंने, लुइस है ने चार्ट दिया है उनके बुक में ए से लेके जी तक कि क्या क्या विचार के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है. और गुड न्यूज इज कि वी कैन शिफ्ट द पैटर्न. जैसे हमने ये पैटर्न शिफ्ट किया, वैसे ही अगर हम अपने चॉइसेस शिफ्ट करेंगे और उधर अफर्मेशंस करेंगे, क्योंकि बहुत बार डर के कारण, गुस्से के कारण, हम हमेशा गुस्सा आने के कारण फीवर भी हो सकता है, या क्लैरिटी नहीं है लाइफ में तो आंखों के ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं. ऐसे बहुत डिटेल में है, अभी सभी डिटेल में नहीं जाऊंगा. यू कैन डेफिनेटली रेफर टू द चार्ट इन द बुक एंड कनेक्ट कि कौन से थॉट पैटर्न में ज्यादा कर रहा हूँ, और उससे एम आई, क्योंकि डिसीज यानी क्या है, इमोशन है, एनर्जी है, हमने बचपन में सीखा है, और एनर्जी कैन नॉट बी destroyed. Yeah, it can be only transformed. Yeah, I will just write in the chat box the book name. It's You Can Heal Your Life by Louise Hay. It's available in almost 25 languages, so you can find it. तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी खुद की बहन, अभी रिसेंटली उसने ये 2 days वर्कशॉप किया, लेकिन जब मैंने इनिशियली उसको बताया था कि जब हम सबकॉन्शियस फियर होती है तो हमारा वजन भी बढ़ सकता है, एंड शी स्टार्टेड अफर्मिंग आई एम सेफ, आई एम सेफ, एंड शी रिड्यूस्ड विदाउट मच डाइट, एंड ये 15 kgs उसका वजन कम हो गया, जस्ट बिकॉज सेइंग दैट आई एम सेफ. बिकॉज सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो बॉडी एक्सपांड्स टू शो दैट I am bigger than my problem, but that is not the way to deal with the problem. It has to be inside out. बहुत सारे ऐसे ग्लोबली एग्जाम्पल है कि it does not mean कि हम मेडिसिन या हम डॉक्टर है. We are just suggesting a side effect free
थेरेपी जिसके कारण हम डॉक्टर की थेरेपी को भी सपोर्ट कर सके बाय शिफ्टिंग आवर थॉट्स। सो डेफिनेटली आप ये बुक में पढ़िए, या उसका एक फेमस सेम नाम से मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम ये पैटर्न कैसे शिफ्ट करें। और एक अफर्मेशन हम डिसीज के बारे में कॉमन कर सकते हैं कि आई रिलीज द पैटर्न इन माय कॉन्शियसनेस which has created this situation. I release the pattern in my consciousness which has created this situation. I release. और जब हम willingly release करते हैं तो वो पैटर्न धीरे धीरे दूर हो सकते हैं. So we can choose our emotion. Vinay ji, sorry to interrupt you. Just one thing, the last line which you said, that I release the pattern in my subconscious mind. Because of that, this situation I have attracted. Yeah. What was the last line you said? I release the pattern in my consciousness which has created this situation. Because लुइस का मानना है इस फिलोसॉफी में कि whatever we see in the outer world is some way, in a way, expression of our own patterns in different way. Either we are suppressing it, or we are avoiding it, or we are in a way hiding it. So the relations we attract, the money and prosperity we have in our lives, the health we have, somewhere डिसीज भी बहुत बार इंग्लिश में शब्द ही है डिसीज, यानी मैं ईज में नहीं हूँ, मैं फ्लो में नहीं हूँ. सो समवेयर आवर बॉडी क्रिएट्स डिसीजेस. दीज आर प्रोबेबल कॉजेस. वी आर नॉट सेइंग कि यही मेन कारण है, लेकिन सबकॉन्शियस मेटाफिजिक्स ये साइंस के हिसाब से हम ये फोकस से डिस्कस कर रहे हैं. सो एम आई क्रिएटिंग द पैटर्न? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, तो अदरवाइज क्रिटिसाइज नहीं करने वाले लोग भी उनको अवॉइड करते या क्रिटिसाइज करते, बिकॉज दे ऑपरेट फ्रॉम दैट एनर्जी. तो डिसीजेस के लिए लुइस का ये अफर्मेशन था स्पेशली. इवन यू कैन हील योर बॉडी बुक में उन्होंने लास्ट पेज में लिखा है कि आई रिलीज द पैटर्न इन माय कॉन्शियसनेस. क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सी इमोशन से कौन सा डिसीज हो रहा है. बट सबकॉन्शियस माइंड इज वाइज इनफ कि इट नोज व्हाट टू रिलीज. जैसे हम क्या खाते हैं, क्या रिलीज करते हैं, बॉडी इज वाइज इनफ. सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड releases it. So we have to be willing and allow that subconscious mind को उसका काम करने के लिए हमें facilitate करना है. I hope I have answered your question. Yes. Thank you. Thank you. So moving ahead, जैसे अभी हमने ड्यूरिंग कोविड हमने वैक्सीन लिए, और जैसे हम अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, सिमिलरली हम अपना काम कर रहे हैं, बट द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम. पीपल अराउंड अस रिमेन द सेम. एवरीबडी हैज सम स्पेशल पीपल टू वर्क ऑन, टू फॉरगिव, टू लेट गो, या टू डील विथ. तो इसके लिए हमें, जैसे हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, एक वैक्सीन लेते हैं, वैसे ही हमें ये अफर्मेशंस का, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का, सेल्फ लव का एक एंटीवायरस लेना है, जिसके कारण बाहर की निगेटिविटी को हम डील कर सके. जैसे लुइस हमेशा बोलती थी कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस इनर वर्क यू विल गेट 2 to 3 रिजल्ट. कि आपका एनर्जी शिफ्ट होगा, तो एक तो निगेटिव लोगों का एनर्जी आप तक पहुंच नहीं पाएगा. दूसरा हो सकता है कि लोग वैसे ही रहें, लेकिन आप अभी उसका इतना फर्क आपको नहीं हो रहा है, या दिस नेगेटिव पीपल और सिचुएशन विल गो अवे. बी रेडी फॉर दैट आल्सो कि आप आपके अंदर इतना काम कर रहे हैं कि वो टॉक्सिक लोग या सिचुएशन आपके लाइफ से दूर जाएंगे बाय एनी मींस. बट वी नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड हैव फेथ इन द प्रोसेस. इट वर्क्स. अनदर बहुत प्यारा और सुंदर एक्सरसाइज व्हिच लुइस वुड strongly recommend and propagate was a mirror work. अभी हम इधर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मिरर वर्क का मतलब है कि जैसे हम रोज खुद को संवारते, खुद को तैयार होते समय आईने में देखते हैं, वैसे ही जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, जब when we were growing up, our elders, parents gave us very wonderful teachings, guidelines. At the same time, subconsciously, they also, in a way, unknowingly program what you can't do, what you don't deserve, what is that like
तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये नहीं जमेगा, तुम कभी मैथ्स में तुम्हारा भाई ऐसा, तुम ऐसे कैसे, दिखने के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, कॉम्पिटेंसी के बारे में, स्किल के बारे में बहुत सारा क्रिटिसाइज और कंपैरिजन हमारा नोइंगली अननोइंगली हुआ है. वी आर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु शेप्ड आवर लाइफ, बट दे आल्सो हैड देयर ओन पैटर्न्स व्हिच अनकॉन्शियसली दे इम्पोज्ड ऑन अस. और वो कैसे किया गया? बचपन में हमारी आंखों में डाल के ऐसे ऐसे उंगली दिखाते हुए किया. सो वो प्रोग्रामिंग हमारे अंदर है. एंड लुई से कहते थे कि हजारों लाखों लोगों को मिलने के बाद she says in one sentence that every person in this world suffers from this mindset somewhere. I am not good enough. I am not good enough. I am not good enough at cooking or dealing with money or relationship or finance or health. That pattern runs. So but the statement remains, I am not good enough. Again, as a child we were all born loving, lovable. Never in the history has a child, newborn or infant has said कि मैं अच्छा नहीं हूँ. Every child is vibrant, full of expression and glory of the God, and the child expresses love, happiness, anger whenever at the very moment. It doesn't suppress. So child is like, इसलिए वो 300-400 बार हंस सकता है. And हमें बोलना पड़ता है smile please. Yes, we are so caught up in our life. So child is a wonderful example and we were all like that. So mirror work यानी क्या है? खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद को, खुद की सपोर्ट सिस्टम खुद बनना है. सेल्फ लव अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स इज मिस्टेकन एज बीइंग सेल्फ ऑब्सेस्ड. नहीं, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फ ऑब्सेशन. अगर सेल्फ लव अच्छा नहीं है तो सेल्फ ऑब्सेशन में आदमी जाएगा. लेकिन सेल्फ लव का सही मतलब है एक्सेप्टिंग आवर डीपर रियलिटी एज बॉडी, माइंड, हार्ट, स्पिरिट. कि मेरे लाइफ के 4 पहलू है एंड यू कैन हील का वर्क चारों लेवल पे काम करता है. कि शरीर और मन का संबंध कैसा है, हार्ट और इमोशन को कैसे डील किया जाए. एंड आई एम अ स्पिरिट, आई एम डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉड. और मेरा पर्पस क्या है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, और वो मेरा फुल मैनिफेस्ट करना है. सो दैट इज रियल सेल्फ लव. और इसलिए आंखों में आंखें डाल के हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है. क्योंकि जो हम वी कैन नॉट सर्व विथ एम्प्टी वेसल, ऐसे बोलते हैं कि जो हमारे पास नहीं है हम दूसरे को नहीं दे सकते. सो व्हाट वी आर क्रिएटिंग विद इन टू गिव आउट इन द यूनिवर्स, इन आवर रिलेशन, इन आवर ऑफिस, इन आवर पर्सनल लाइफ. सो वो स्टोरी के लिए एक छोटा होमवर्क और भी है कि आप मिरर में जाके थोड़ी देर विदाउट मेकअप के बिना खुद देखते हुए, खुद को देखते हुए, जस्ट स्टेयर, लुक एट योरसेल्फ, be comfortable, don't like avoid looking at yourself, just be there and say to yourself that I love you, I accept myself. और जो भी अफर्मेशन आपको करना है, जो आपको लगता है कि ये पेरेंट्स ने मुझे बोलना चाहिए था, that you can say to yourself without any judgment. Initially थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन gradually we will be able to do that. And that is the wonderful way to connect with ourselves. And लुईस का रिसर्च है कि 10 times affirmation का पावर उससे बढ़ सकता है when we connect, because relationship with ourselves is always there. Other relationship has various factors playing into motion. और एक है कि हमारे हर एक के पर्सनल लाइफ के जर्नी में एक हमारा इनर चाइल्ड है. जैसे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि हर एक के अंदर एक, कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल एज हो, 40, 50, 60, 30, हर एक व्यक्ति के अंदर एवरी पर्सन हैज अ स्मॉल चाइल्ड ऑफ 3 to 5 और 7 years के बीच में जो ऑपरेट होता है. और इनर चाइल्ड का प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है उसके हिसाब से हम अपनी बाहर की दुनिया रिक्रिएट करते हैं. और इसलिए इनर चाइल्ड का हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी मान लो हम एक रूम में हो, 40-50 लोग हम एक रूम में हैं, और उधर एक 3 से 5 साल के बच्चे को लाया जाए, तो वो बच्चे की बेसिक नीड क्या होगी, इमोशनल, फिजिकल नीड क्या होगी?
what does that small child want? He wants love. He wants somebody to play with him. Yeah, basically very good. The child will want कि yeah, my parents are around, या प्रेम जी attention लगेगा उसको. He needs care, he needs safety, security कि my parents are around. लेकिन मान लो 30-40 लोग उसके तरफ घूर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, the child will like cry at top of its voice. He doesn't feel loved, accepted, respected, safe. He feels threatened, abandoned. Similarly, in our life, when we were growing up, because we were not logically equipped to deal with the life, we were subconsciously got certain messages, और उसके कारण अगर समझो गिल्ट बहुत ज्यादा इनर चाइल्ड ने एक्सपीरियंस की है जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हमेशा उसे बैड या सॉरी लगेगा कि मैं कितना ऑलवेज फीलिंग दैट सॉरी, नहीं वो ज्यादा सॉरी सॉरी बोलते रहेगा, एंड ही विल ऑलवेज अट्रैक्ट सिचुएशन वेयर ही विल फील सॉरी, या कि वो कुछ चीजें मांगेगा नहीं बिकॉज ही डजंट फील दैट आई डिजर्व दैट, या और वो गिल्ट दूसरे को भी गिल्ट मैनिपुलेट करेगा, दूसरे को भी गिल्ट फील करेगा बिकॉज दैट इज द होमली फीलिंग ही हैज एक्वायर्ड एज अ चाइल्ड, या वो बाउंड्री सेट करने के लिए, इमोशनल हो फिजिकल, दूसरे को अलाउ करेगा उसको हर्ट करने के लिए, बिकॉज दैट हैज बीन हिज प्रोग्रामिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे ही लोग और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेगा हु विल मेक हिम और हर गिल्टी. सो एक वुंड हो सकती है गिल्ट की वुंड, एक होती है अबेंडनमेंट की वुंड, कि हमेशा उसे लगता है कि लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आई एम लेफ्ट आउट, नोबडी सपोर्ट्स मी, और उसे हमेशा डर लगता है कि कोई ना कोई मुझे छोड़ के जाएगा, एंड अकेले रहने में उसे डर लगता है, खुद की कंपनी वो नहीं रहेगा, और इसलिए वो कोडिपेंडेंट रिलेशन, भले वो रिलेशन में लोग उसे एक्सप्लॉइट करे लेकिन उसे लगता है एटलीस्ट मेरे साथ कोई तो है, और वो ऐसे रिलेशन अट्रैक्ट करता है जहां वो लोग उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बट द he feels abandoned. So that is the inner healing, inner wound है. Trust wound भी हो सकता है जहां से लगता है कि I don't trust other people, don't trust me. And this inner child के yeah, please unmute. उसे हमेशा लगता है कि nobody is trustworthy, और वो खुद भी खुद पे ट्रस्ट नहीं करता, और ऐसे ही रिलेशन अट्रैक्ट करता है जहां ट्रस्ट इशू है, सेफ्टी नहीं है. एंड लास्ट इज कि निग्लेक्ट, कि लेट गो करने के लिए उसे स्ट्रगल होता है, लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ होता है, इसलिए वो खुद को कॉन्फिडेंटली स्टैंड नहीं कर पाता, इजीली एजिटेट या एंग्री होता है, ना नहीं बोल सकता, या इमोशन को सप्रेस करता है, और हमेशा ऐसे ही रिलेशन अट्रैक्ट करता है वेयर कि जहां वो नहीं देखा जाए, लाइक ही लाइक्स टू हाइड. सो द पॉइंट हियर इज कि एवरीबॉडी इज प्रोग्राम्ड इन डिफरेंट वे, बट हीलिंग का मतलब है कि हमारे बर्थ से लेके अभी तक के हर फेज को और हर लाइफ की स्टोरी को कंसोलिडेट करना, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना और उसे रीप्रोग्रामिंग करना, देन एंड देन ओनली healing can happen. We cannot reject part of us and heal ourselves. We need to first accept कि हाँ वो मेरा एक गया हुआ पास्ट था, that has happened with me. हाँ? Accept, express, release and move on. So that is, and another beautiful part we will just conclude in 5 minutes and then we'll open for question answers. कि letting go, self love का दूसरा एक पार्ट है कि छोड़ देना, जैसे हम इस इमेज में देखते हैं कि sometimes holding on does more damage than letting go. कि बहुत बार हम अपने पैटर्न की, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, why did it happen to me, and it could be situation, it could be people, it could be any other aspect of life. So let go करना, forgive करना इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरा करते रहे और हम सहते रहे और सॉरी यानी I forgive you बोलना, नहीं, that is not the practical forgiveness which we are discussing here. Here we are talking from a human level कि मुझे जिंदगी में और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है,
और जो मुझे रोक रहा है, जैसे समझो एक नाव है, बोट है, विच इज एंकर्ड, एंकर रहता है ना, अगर वो एंकर नहीं छोड़ा तो वो बोट या शिप आगे नहीं जा सकती. सो लेटिंग गो इज लाइक letting go of that anchor so that we can go ahead, move ahead. Otherwise, we are living in the past moment which does not exist. 2010 में उसने मुझे ऐसा ट्रीट किया, so I'm hurt because of that. I can never forgive that. I will never allow that person to like let go of my mind. But who is suffering? Do we want to be happy, or do we want to prove I am right? Of course, in logical context, sometimes we need to teach other person lesson. Sometimes we have to logically, legally, whatever. That is the practical art. But inside our heart, what we are creating, are we really feeling that peace, happiness, or are we like burning in that agony? I will never forgive that. So it's very important to how do we forgive, and what is real forgiveness and what is pseudo forgiveness. Wo bhi important, and forgiveness can create miracles in our lives. And that's why the whole philosophy of creating new life and better life, how हमारे लाइफ का कंपास क्या है, ट्रू नॉर्थ क्या है, किस दिशा से हम अपने लाइफ को जा रहे हैं. एंड ultimate quote by Louis है कि I don't fix my problems, I fix my thinking and problems get solved easily. Normally we have the pattern कि इस आदमी का बिहेवियर फिक्स हो गया तो मेरा लाइफ अच्छा होगा, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में फिक्स हो गई तो मेरा लाइफ अच्छा होगा. बट इट डजंट वर्क इन दैट वे. इफ आई fix my thinking, it fix means not quick fix, but if I elevate my thinking, if I मैं अपने choices अच्छे करूंगा और reality उससे अच्छी हो जाएगी. So overall this was the quick. एक है कि self love, हमें खुद से अनकंडीशनली स्वीकार करना है, खुद से प्यार करना है. कौन से बॉडी माइंड कनेक्शन से हमें थॉट्स से डिसीजेस अट्रैक्ट होते हैं, उसका पैटर्न देखना है, और क्या छोड़ना है, कौन से पैटर्न ये ऑब्जर्व करना है. सो इन अ नटशेल these are the key points. If you have question, just keep it ready. I will just show you the some glimpses in our like 2 days workshop जो हमने लिया था recently, जहाँ बहुत सारे अच्छे फीडबैक आए. These are like other workshop memories of You Can Heal Your Life, where wonderful souls come together, and these are some wonderful feedbacks received from our participants. I would like to just share one feedback, so to get the glimpse of what the workshop is all about. Hello, I'm Deepa Manish Deshpande from Kolhapur. For last 26 years, I am working in engineering industry. During COVID, I attended what? Okay, screen visible? No, Vinay, we are just able to. Audio is there, but no video. But I guess that's fine. We can continue with the audio. Okay. Yeah, now we can see Now the. it's visible. Okay. I'm Deepa Manish Deshpande from Kolhapur. For last 26 years, I am working in engineering industry. During COVID, I attended a WhatsApp course by Mr. Vinay Gosavi sir, which is Love Yourself and Heal Your Life. And I was eagerly waiting for the physical course. So before 6 months, I attended this course by Vinay Gosavi sir, and I would like to share my experience. The things which I learned in the course are really fantastic. Actually, हमें पता नहीं होता है कि खुद से प्यार करना होता है. So in that course you can really learn how to love yourself. बहुत बार नेगेटिविटी मन में रहती है, we cannot express to anyone. So how to release your negativity? Affirmations क्या होते हैं? Mirror work क्या होता है? बहुत बार किसी से झगड़ा होता है, we cannot forgive them. So how to forgive and release our tension? ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम ये 2 दिन के वर्कशॉप में सीख सकते हैं. ऐसा भी लगता है कि अरे हमारे मन की बात है जो सबके सामने कैसे बताए.
लेकिन लुइस हे जो है, उन्होंने ये वर्कशॉप इतने अच्छी तरीके से डिजाइन किया है, एंड सेम पीपल विद सेम माइंड, they they will be in your workshop. So बहुत अच्छी तरह से we can express ourselves, किसी का कोई प्रेशर नहीं रहता है. और विनय गोसावी सर जो है, तो पर्सनली उनके आवाज में ही एक जादू है. when you hear his voice, 50% of your tensions and negativity, वो चला जाता है, भाग जाता है. So I could experience, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी और इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप. I regularly do practice of mirror work, affirmations, meditation, and there is drastic change in my day-to-day life. So मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वर्कशॉप जरूर करें और अपने अंदर के खुद को नए तरीके से पाए. थैंक्स अ लॉट. These are some glimpses. So Poonam ji, you would like to share or announce? Or... Definitely, I'm always happy to announce this. Yeah. Next month, in month of July, 8th and 9th July, we have planned this session in Mumbai. It's in Andheri East, Shubha Galaxy Hotel. So I guess you have got glimpses of the objective and the importance of this workshop. We had first batch in Mumbai because Vinay is mostly working in Pune and Kolhapur. So we have launched this batch last time in Mumbai. We got very amazing feedback about the session. And the best part of this session, because Vinay and I had long career and experience in training. So we just thought what happened many times once you do the workshop, you feel very, enthused and, your energy is at top. But once you go back to your work and regular life, slowly and gradually, we again get caught up in the rat race, and whatever learning we got in the workshop, it's difficult to maintain or the sustain that learning. And that is why we have come up with this unique concept of, after this 2 days workshop, we are giving 3 months hand holding support system that includes 3 individual session. Why individual session? Because each person is unique and their life is unique, their challenges are unique. So to address that challenges and to sustain your workshop learning, we are offering 3 individual sessions plus a 3 group session where the same group which work together for 2 days will come together. Vinay will introduce few more tools in that group to sustain your learning. So this entire course is you can say the actually 3 months, which includes 2 days non-residential workshop, a full day workshop, and 3 months hand holding support. So fee structure for this is 15,000 and early bird discount is 12,000. Vinay and I truly believe on spreading this methodology. So if you have any concern about methodology, philosophy, fee structure, logistic, please get back to us, and we are happy to solve your problems or queries regarding that. We will be happy if you drop your contact number, name and contact number in chat box. And of course, our contacts are mentioned in the brochure, but I do not have idea because many people randomly, people believe in this philosophy and they keep forwarding or spreading the message whenever this kind of workshops are happening. So we may not have your connects or contact number, or you may not have our contact number. So please drop your contact number in chat box and also mention how do you find this program. And we are more than happy if you unmute and share your feedback about this program and what is your takeaway from this session. And if you are not comfortable talking, unmuting and saying, feel free to type in chat box. Yeah, absolutely. Thank you for that wonderful update. And we would appreciate if you could just quickly share
your takeaway or what connected you the most? So Anybody? hi, Vinay. Hi, this is Rama. Yeah, Rama, please. So it was a wonderful session. Thank you so much for your time and efforts that you've put into it, and it's a wonderful work, area of work. I really enjoyed when you connected dots with how we develop these kind of patterns with regards to the upbringing that one has. Hmm. Lot of things go unconsciously into our brain, and those patterns are they become lifelong patterns unless we are being aware of those patterns. This philosophy, this way of work, I guess, would make one aware of what kind of patterns a person is experiencing. So that self discovery is, I think, the point where people start uh, actually working on themselves. So this is really this really touched me, and really happy about it that I attended this session. Thank you so much. Thank you so much, Rama. Hello. Yeah, Kalyani ma'am. Yeah. Fantastic. You are a very friendly kind of a person. It looks like, to hold hands and to go about all these things. And another thing, what I liked was your similes of anchor and boat. You have to let go in that same fashion if at all you are supposed to float. Otherwise, you are only tied to that particular thing again and again. It was such a fantastic thing that dawned on me. I am a old lady still. I mean, there is always something to learn that you can understand from this. Certainly happy to have a senior person like you. Yeah, thank you. We'll also share our number in chat box. Yeah, Lalita ji, you would like to. Yeah, hi Vinaji. I was reading all these books, but not the one which you were talking about today. But there was so much of learning in this 1 hour of session, and it's like I was badly needed this. It was as if it was meant, for me. Giving so much of insight, and then those examples, because it's like we people love to listen stories, and that remains in our mind for a very long time. So Hmm. where we were talking about the boat, this kind of exercise, so I can actually resonate myself with all these things. And I feel that people, it's people who needs to heal, it's not only for them. This unconsciously we all are living a kind of life which is not fit for ourselves, because of through our Hmm. thoughts. So I've learned a lot. Even I was taking a screenshot also of those small things, the slides which you were showing, so that I can, whenever I get time, I'll just see those. And I really like that one where you said you visualize your own thought, your own Right. whole day thought. So yes, it was amazing. It was a kind of eye opener, and it is like I loved each and every part of it. And you have something in you that this more the simplicity, and it was all coming that yes, that I felt in that way. It was amazing session. Thank you so much. Thank you so And much. thank you for taking up time and giving this much of knowledge and sharing it. It was amazing. It was amazing. Thank you. I would like to add one line. So we know this is one. In fact, one of friend was chatting with me when session is going on, and she has read this book. In fact, I guess she's the one who has introduced me with this book. So what happened many times when we read something, we like the thought, we like the philosophy, but there is a gap, understanding that philosophy and implementing that philosophy. So this True. workshop gives you opportunity for the application of the philosophy Louis Hay practices. So it's worth exploring this workshop. Apart from that, I personally believe, mental work, or constant work on your emotional capacity has to uh, go on. This has to be a continuous process, just like for our physical stamina we keep doing diet or exercise or
and number of things. Similarly, I think to build our emotional capacity, we need to invest on emotional health, and it could be anything. So basically, we organize this workshop to introduce Louis Hay work and what we are offering in 2 days workshop to give the glimpses of that. But apart from that, if you think, if any point you find very valuable in this workshop, please take this as a lead and start working on it. So you may go for a counseling, you may opt for any other healing methodology. You can watch Louis Hay's video and start self work. So it's nothing like, you have to come and attend our workshop. If you come, we are more than happy. We are very welcome to, we are welcoming you. But do not stop here after this 1 hour workshop. Please try to get and involve whatever methodology suits to you for your own emotional healing. So that is my kind request, all of you. Poonam, here I would like to just add this thing that definitely all these things, the self work, when we do it, it really impacts us. But then, it's like when we join the people of like-minded, the energy that also has a very great influence actually. So it's like my energy with my book. But then, when I have similar kind of people with the same mind thought process, so the energy really, really works actually. Definitely. Absolutely. Specific workshop is fully experiential. It's not only gyan and only Yes. conceptual. More of it's like emotional catharsis. And globally, it is since 1980, Louise herself has designed it. In 72 countries, it has been conducted. So it's a magical power of Louise in it. Yeah. And we would also request you to watch the movie. It is in English and or Hindi. It's available on YouTube with the same name. You can heal your life. Yeah, all this while I used to think that I don't know whether it's true or not, but then like Poonam is coming, you are coming, so you are like actually yes. Then I said okay, people like you when you are talking about it, so that means it has a impact actually. It has a more you come to know about such kind of information, then you said okay, fine, they are influencing people's life and they are impacting actually. So it's not only till the book, it is spreading among the humans. So yes. True. So anybody else would like to share, or we are good to conclude? Yeah. Definitely. So thank you so much for your participation, taking out time for yourself, and being here present, being participative. It's a wonderful participation from your end. And once again, thank you so much from Pink Mind and from Vinay. Vinay, would you like to conclude? Would you like to say any concluding statement? Yeah, definitely. Thank you so much, Pink Mind, for this wonderful opportunity and platform to share these wonderful thoughts of Louise. And I thank each one of you for your valuable time and your inner journey and giving me the opportunity to share. So thank you. We have shared our numbers in chat box as well. So please feel free to connect regarding any of these learnings. Thank you so much. Good night. Yeah, Vinay, you can do stop recording and don't end meeting.